Hey, this is Himanshu. Once again, welcome back to Utopian Concept Tutorials, the series of English language learning in ODIA. Today's video is completely based on new syllabus of ICSE students, means those who have been promoted to grade 9, means 9th grader, and when they will give their board exam in the year 2024 and 25. एमानक पे नुआ syllabus. Because this year ICSE board introduced करछि गोटे नुआ प्ले जार ना होछि जूलियस सीजर और ये जूलियस सीजर होछि वन ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर आउ इम्पोर्टेंट एथि पई ए सीरीज रो ये प्रथम वीडियो आज थ्रू एक्सप्लेन करा जीवो लाइन बाय लाइन आउ सेति पई एटा इम्पोर्टेंट प्लस ता सहित एटा ए भी इम्पोर्टेंट एथि पई कारण ए जो प्लेटा ए प्ले रे आर लैंग्वेज इट्स लैंग्वेज ए प्ले रो लैंग्वेज ता एक्चुअली almost mostly outdated आउ ए लट्स ऑफ ट्रेडिशनल वोकेबुलरीज बहुत गुड़े ट्रेडिशनल वर्ड्स देखा मिलो आउ जोटा कि सहज भी नुहे बुझिया विशेषकर स्टूडेंट्स मानी आउ ता छड़ा यहाँ गोटे वर्ड्स फॉर्म रे अच्छी राइट तो यही सब जिनस को आखि आगे रखी टीम यूटोपियन एंड हिमांशु हैव जस्ट ट्राइड देयर बेस्ट टू ईज द डिफिकल्टीज ऑफ आईसीएसई स्टूडेंट्स केते सहजरे आईसीएसई स्टूडेंट्स माने एई प्लेटा को बुझी पारिबे सेथिपाई ए जो सीरीजटा को अपलोड करा जीवो ओके दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट एबे जीवा में ए जूलियस सीजर प्ले विषय रे मुझे ऑलरेडी आई हैव सेड यू दैट इट्स ए माने ए प्लेटा होची गोटे माने वन ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर ए जूलियस सीजर को कन्वीनियंटली 5 एक्ट्स रे डिवाइड कराई छी बट आई हैव कन्वीनियंटली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कना पार्ट 1 ने मु किछि इंट्रोडक्शन सहित किछि लाइन को एक्सप्लेन करिबि आ नेक्स्ट पार्ट रे एटा कंप्लीट हबो राइट एबे मते जूलियस सीजर विषय मु किछि आई वुड लाइक टू गिव यू ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ए डिस्क्रिप्शनटा कोन ए प्लेटा होची गोटे पॉलिटिकल प्ले ए प्लेटा गोटे डिस्क्राइब करछि एमिति गोटे घटना जार ना होची माने कैटास्ट्रोफिक इवेंट आ से इवेंटटा कोन माने स्पेशली व्हाट डज इट मीन इन जूलियस सीजर ए होची गोटे इवेंट गोटे मोमेंटस वेरी ट्रेजिक इवेंट जार आरंभ होची एक्सट्रीम माने मिसफॉर्च्यून गोटे अत्यंत दयनीय दुर्भाग्यरू एंड एंड्स विथ कम्प्लीटली ओवरथ्रो संपूर्ण आर अवसान घटुची संपूर्ण ध्वंस यही टाइप्र गोटे घटनाटा थ्रू आउट प्ले रे देखा मिलो किंतु एक्ट 1 सीन 1 आरंभ हुए रोम राजरास्तारू राइट जो देखा मिलो द वर्किंग क्लास पीपुल दे हैव जस्ट गैदर टू सेलिब्रेट द सीजर्स विक्ट्री ओवर द सन्स ऑफ कौन पंपे हूँ द वन ऑफ द रेनाउंड पॉलिटिकल फिगर ऑफ रोम ये मानक ता सहित यही सीन रे आमे किसी चरित्र को देखा कमनर्स मीन्स वर्किंग क्लास पीपल ता सहित ट्रिब्यून्स 2 जन ट्रिब्यून रो माने कौन विशेषकर जूलियस सीजर रे व्हाट इज दिस टर्म मीन इन जूलियस सीजर ट्रिब्यून माने रोम रो ऑफिसर माने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल लोक प्रतिनिधि ये माने इलेक्ट हुअंती मेंबर्स ऑफ द लो सोशल क्लास बहुत निम्न श्रेणीर माने जो क्लास लोक मान द्वारा निर्वाचित होती एम मुख्य काम होला जस्ट टू प्रोटेक्ट दस कमनर दिस एक्ट 1 सीन 1 ओपन्स इन द स्ट्रीट ऑफ रोम रो राजरास्तारू ए सीन फर्स्ट सीनटा आरंभ होची वेयर वी विल फाइंड हाउ द वर्किंग क्लास पीपल हैव गैदर्ड जस्ट टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ सीजर ओवर द सन्स ऑफ पंपे द वन ऑफ द रेनाउंड पॉलिटिकल फिगर ऑफ रोम किंतु ए सीन जो कैरेक्टर सहित आरंभ होची से कैरेक्टर ना होची फ्लावियस वन ऑफ द ट्रिब्यून एटी फ्लावियस कौन करुची से जिनसटा को मुझे पढ़ुची फ्लावियस हेन्स होम यू आइडल क्रिएचर्स गेट यू होम इज दिस अ हॉलिडे व्हाट नो यू नॉट बीइंग मैकेनिकल यू ought not work upon a laboring day without the sign of your profession speak what trade art thou एटी फ्लावियस जो कैरेक्टर ही स्टार्टेड टू रिब्यूक द कमनर्स मीन्स वर्किंग क्लास पीपल को गाली देवा आरंभ करछि एटी हेन्स मीनिंग होछि गेट अवे फ्रॉम हियर मीन्स लिव दिस प्लेस एट वंस एंड गो टू होम यू आइडल क्रिएचर्स एटी वर्किंग क्लास पीपल मान को फ्लावियस रेफर करछि कहजे तमे माने लेजी पीपल बिकॉज यू आर स्पेंडिंग योर टाइम जस्ट विदाउट डूइंग नथिंग राइट किछि न करी अननेसेसरी तुम समयटा को नष्ट करछो Do you think is this a holiday? Do you think this is a holiday? आज कौन छुट्टी? What? No, you not. You people don't know. Being mechanical means working class people. Those who belongs to working class people. Flavius Couchi, you are working class people, and you ought not work upon a laboring day.
laboring day means working day, especially on a working day you should have been at your working place. तमें तुमको कर्म क्षेत्र रहिबा दरकार विशेष करी गोटे वर्किंग डे रे and without the sign of your professions means you people have not put on your working clothes and even you have forgotten to take the badges of your profession. तुम प्रोफेशन में तुम जहाँ जहाँ काम से काम हिसाब से जो टूल्स नवा कथा ना तुम से सब को नहीं ना वर्किंग क्लोथ्स को तुम पिंधिच राइट आउ यू पीपल आर वेस्टिंग योर टाइम जस्ट गैदरिंग ऑन द मूविंग ऑन द स्ट्रीट राइट एंड स्पीक व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ यू जस्ट टेल मी व्हाट बिजनेस डू यू डू बा व्हाट्स योर प्रोफेशन बा व्हाट्स योर जॉब से कमनर्स मान भितर बा वर्किंग क्लास पीपल भितर फर्स्ट सिटीजन why sir a carpenter why sir I am a carpenter तापरे एठी आउ गोटे ट्रिब्यून जे अछि मु जेमति कहितली दुईटा ट्रिब्यून गोटे फ्लावियस एठी नेक्स्ट ट्रिब्यून माने रोमान ऑफिसर जोटा मरुलस where is thy leather apron and thy rule why dost thou with thy best apparel on you sir what trade are you. Then another tribune named the Marulus asked, where is your, जो carpenter कही I am a carpenter, तो ताक पचारुची where is your leather apron? ए leather apron टा साधारणतः से माने करो uniform and thy rule means your rule. एटी rule होची जो foot tool used by the carpenter. जोटा मपापी करे पे जोटा व्यवहार करा जो tools टा से कथा को ये सब जिनसु काई. Where is your leather apron? Means leather your working clothing and your instrument means tools your rule. What dost thou with thy best apparel on? Why you are in your best clothing means finest clothing, nicest clothing. भलो ड्रेस पिंधि के कौन कर you sir what trade are you? What profession means what business do you do? What's your job? Second citizen होची गोटे cobbler. Second citizen कौन कहूँ truly sir in respect of a fine workman I am but as you would say a cobbler. In respect of fine workman what does that mean? Means in comparison with a fine workman right as far as I can be considered as a fine workman जदि मते गोटे कुशल कारीगर हिसाब से जदि विवेचना करा जाए बा ग्रहण करा जाए but I am but one would say like you would say जड़े मत निश्चय कह वन वुड से ए मेंडर ऑफ शू मीन्स मु जोता मरामती करे माने मोची राइट एटी कोबलर द वर्ड एटी शेक्सपियर यूज कर पंस द पंस मीन्स पंस होची इट्स ए काइंड ऑफ ह्यूमरस वर्ड माने हास्य उद्दीपक शब्द माने अम्यूजिंग काइंड ऑफ वर्ड्स जहाँ को व्यवहार करा जाए जार अर्थ होची एमाने एक्चुअली द साउंड नियरली अलाइक बट विथ डिफरेंट मीनिंग्स राइट कोबलर यूज एटी कोबलर जो पंस की यूज कर जस्ट टू कन्फ्यूज द ट्रिब्यून्स आउ साधारणतः गोटे कथा मुझे मन रखा पड़ो ट्रिब्यून्स माने साधारणतः एजुकेटेड एंड दे आर फ्रॉम द हाई वन फैमिली सो यही टाइप एजुकेटेड लोक को कन्फ्यूज करने कोबलर कौन कर पंस यूज कर जोटा शेक्सपियर यूज कर पंस थ्रू माने कोबलर राइट दिस थिंग एक्चुअली मेड मरुलस मीन्स ट्रिब्यून्स द मरुलस एंग्री ये कथाटा ताको किंतु बहुत रागे देछि एक्चुअली दिस थिंग डिड नॉट गो डाउन वेल विथ द ट्रिब्यून द Marulus gets angry and said but what trade art thou answer me directly he was just simply tell me directly is that what profession what business do you do what's your profession simple you second citizen again cobbler एटी कोबलर कौन कहूँ सेकेंड सिटीजन कहूँ ट्रेड सर दैट आई होप आई मे यूज विथ ए सेफ conscience which is indeed sir a mender of bad souls again bad souls sure souls our souls human souls again this cobbler has used puns means humorous word को use करची just to confuse the educated tribune right कौन कहूँ ना ये trades are what a trade in which a person usually use with a safe conscience means use with a clear conscience. Conscience means actually it गोटे moral understanding of what is right and what is wrong. जनकर विवेक द्वारा जड़े जापर जे यहाँ कौटा ठीक कौटा रंग से को लेकिरी कौन कर जो मनीष कम कै मुझे मनीष which is indeed sir which is of course sir a mender of bad souls.
রাইট মেন্ডের ব্ୟାଡ୍ সোଲ୍ସ ମାନେ ଜୋତା ଯେତେବେଳେ ଧର ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ ଯେଉଁ ଫାଟିଯାଏ ତାକୁ ଯେଉଁ ରିପେୟାର କରନ୍ତି ସେଇ ମୁଁ କୋବଲର ମେଣ୍ଡର ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ପନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ଇନ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିସ୍ କୋବଲର ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ he also mend means repair the person's mental moral or emotional nature. This puns really makes the tribune the Marullus angry again बहुत चिड़े देछि रगै देछि the Marullus कौन कहूछि what trade thou knave thou naughty knave what trade simply you tell me what profession or what business do you do or what's your job tell me. एटी जो नेव मीन्स डिसऑनेस्ट बा अनप्रिंसिपल्ड फेलो याकू रोग कुहाउछि लेखा जाइछि एंड दाउ नॉटी नेव मीन्स ये गुड फॉर नथिंग काइंड ऑफ द फेलो यू आर सिंपल यू आंसर मीन्स दैट व्हाट प्रोफेशन डू यू डू कि प्रकार तुमर वृत्ति कौन तमे कौन काम कर मते से केमिति रिप्लाई दउछि माने कोवलर ने आई बेसिच यू सर बी नॉट आउट विथ मी येट इफ यू बी आउट सर आई कैन मेंड यू अगेन पंच को यूज कराइछि मेंड माने सु रिपेयर को बुझाए आर मेंड माने गोटे जनक चरित्र को इम्प्रूव करिया को बुझाए तो एटी सेकंड सिटीजन कोबलर रिप्लाई करछि उत्तर दउछि आई ऑनेस्टली रिक्वेस्ट यू सर बी नॉट आउट विथ मी डोंट बी एंग्री विथ मी इफ यू बी आउट मीन्स एटी डबल मीनिंग एटी होछि इफ योर शूज गेट डैमेज्ड सर आई कैन मेंड यू इट मीन्स आई कैन रिपेयर योर शूज बट द कैरेक्टर the you tribune one of the tribune named Marullus takes it differently. He understands that the cobbler wants to say him that he can improve his character. से तार चरित्र को कौन करे इम्प्रूव करि परिबो से कथा को नहीं दिस थिंग एक्चुअली कौन मेक्स Marullus angry. तो से रागी जे कहूछि Marullus कहूछि व्हाट मीनस thou by that mend me what does this word mend me mean the thou such fellow you disrespectful fellow. Second citizen कहूछि why sir cobble you sir mend your shoes. Flavius जो फर्स्ट ट्रिब्यून से कहूछि ओ thou art a cobbler art thou oh it means that you are a cobbler are you. Second citizen से cobbler कहूछि truly sir yes sir all that I live by is with my all. एटी all again puns all means এটা गोटे टूल्स which is used by the cobbler just to make holes in leather आउ all होछि all all होछि गोटे डिटरमिनर प्रोनाउन all that I live by means all that I make my livings just by using this tool using this all AWL. I meddle with no tradesman's matter. I never interfere with any kind of affairs of businessmen by politics. Nahi bhi I never interfere with any kinds of affairs of women nor women's matter. But withal, nevertheless I am indeed sir a surgeon to old shoes. When they are in great danger I recover them. जस्ट सर्जन जमी तो ऑपरेशन करे आउ ट्रीटमेंट करे विशेष करी जे कौन सी डिफॉर्मेट पार्ट टाको बॉडी रो ताको रिप्लेस कराए बा इंजुरी को ट्रीट करे एई टाइप रो मु कोन करे आई सिंपली मेंड द डैमेज शूज एंड व्हेन दे आर इन ग्रेट डेंजर when the shoes are in the in great danger means actually worn out condition damaged condition I recover them I just try to restore them in good condition right restore them in good condition. A proper man as ever trod upon neat's leather have gone upon my handiwork. It proper refers to the noblest person, the gentleman, the best gentleman. As ever trod upon neat's leather, neat it hochi cow's leather, right? It hochi the noblest person, the best gentleman, who have worked in their leather, cow leather shoes. They have worked in my elegant shoes means से माने मोर जो हैंडी वर्क जो रेफर करा होची मोर जो कारीगरी हाँ से विषय भी से माने कौन अवगत निश्चय हेती राइट. फ्लावियस कहूची but wherefore art not in thy shop today why for what reason wherefore means for what reason you are for what reason you are not in your shop today आज तो तू तो दुकान में कहीं ना हो right
and why dost thou lead these men about the streets, and why you are moving on the streets and leading this your fellow workmen. तोर सहकर्मी मानक तू अननेसेसरी कहीं गोटे माने भूल रास्ता देखौछु आ तू कहीं रास्ता बुलुछु, राइट. द कोबलर रिप्लाइड, ट्रूली सर, टू वेयर आउट देयर शूज टू गेट माइसेल्फ इनटू मोर वर्क. आर माने होची I just want my fellow workmen work more and more, so that what will happen? Now they will make holes in their shoes, and when they will make holes in their shoes, they will come to me. In this way I will get more works. जदि से बेसी रास्ता चलाती ताल जोताटा नष्ट ही हम आ जो जोता माने डैमेज हम से मो पाखु आसवे. इन दिस वे आई विल गेट मोर वर्क. एमती यही उपाय मुझे बेसी काम पाइबी. बट इंडिड सर we make holiday to see Caesar and to rejoice in his triumph. किंतु वास्तविक कथाटा किंतु सेटा नुहे. कथाटा ये भी गोटे सत जे we make holidays means we have taken a day off from our work just to see Caesar. Caesar को देखिबू and to rejoice means to celebrate करिबू the victory of Caesar in his triumph. Rejoice in his triumph. Only this much. तो आज पार्ट 1 रे मुझे एक्सप्लेन कली लाइन बाय लाइन. मु नेक्स्ट पार्ट रे नेक्स्ट बाकी जितक लाइन रही सेटा को कंप्लीट करी सो दैट एक्ट सीनटा कंप्लीट हो जाए पारिबो. किंतु बर्तमान कथा होची जदि माने विशेष करी तुम माने भावुछ जे यही एक्सप्लेनेशनटा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशनटा आमको निश्चित भाव में हेल्पफुल हम. तो एटलिस्ट डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, शेयर, लाइक. आ मोस्ट इंपोर्टेंट कथा होची कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत को माने कमेंट दबा को जेमती न भूल से कथा ही कहया को चाहे. थैंक यू सो मच.